share the screen as well. Wait for a while. Wait for a while. Let me share the screen. So, आज का सेक्शन 2 के नाम है, ठीक है। कल हम सेक्शन 1 कर रहे थे, मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए थे और मैंने आपको बुक 11 to 16 के लिंक्स भी फॉरवर्ड किए थे। आप जो स्टूडेंट्स 15 के कर चुके हैं, आप 11 पे चले जाए, 11, 12, 13, 14 सेक्शन 1 को टारगेट करें, ठीक है। और जैसे ही आपका सेक्शन 1 मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर आप सेक्शन 2 पर तशरीफ ले आए, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या होता है, बुक 15 को ही फॉलो कर रहे हैं। टेस्ट 1 2 आज देखते हैं आपके साथ कितने टेस्ट होते हैं, क्योंकि उम्मीद है ज्यादा हो जाएंगे आज। 15 section 1 test 1. okay, we better start. Session, then I'm gonna share with the things and all of it. Okay, we better start. Okay. Yes, sir. Uncertain events and situation. Remember that conditional means uncertain events. We are not certain about it. It means we are not sure about it. In Urdu, हमें यकीन नहीं है whether it will happen or not. It's all about the uncertainty. Remember this. While we are using uncertainty. It's not about the surety, whether in the present, past, and the future, mixed, zero. It's zero is, you can say, general truth. Apart from the zero conditional, like conditional number 1, conditional number 2, conditional number 3, I think type 1, type 2, and type 3. Remember that we are not certain about it. Like in clause after if, we usually talk about the uncertain event and situations, things which may or may not happen, or may not be true. इसका मतलब क्या? What does it mean? शायद हो, शायद ना हो, शायद सच हो या शायद सच ना हो. Like I said, ask John if he's staying tonight. He may or may not be staying. I'm not sure about it. So it means whenever we are talking about the conditionals, we are not sure. Even the first, second, third, there is no surety at all apart from the zero condition. That is the general truth. So that's why. If I see Anne, I'll give her your message. If I see Anne means what? I may or may not see her. शायद मैं उससे मिलूं या शायद मैं उससे ना मिलूं. Okay, that is all about the uncertainty. Remember this, whenever we are talking about the conditional, it's all about the uncertainty. I'm not sure whether it will happen or not. It's like a 50-50. Like I said, if it rains, 50-50. It means 50-50. If it rains means agar barish hogi, I'm not sure about it. Whether it will rain or not, I don't know about it. I just making a guess. That is like a may. It may rain or it may not rain. It depends. Shayad barish ho ya shayad na ho, I don't know. That is why I'm using when. That is why I'm using if. If it rains, I won't come. I'm giving you the condition. I'm putting a condition to you. What we call in Urdu shart. That is called conditional sentence when we are setting a condition. A condition is something that has to be fulfilled before something else can happen. यानी एक चीज से पहले दूसरी चीज हो. If normally means it's sometimes followed. Okay, like if X happens, Y follows. अगर ये होगा तो वो होगा, something like that. Like I said, if the rain stops, what does it mean? May or may not stop. If the rain stops, it may stop or it may not stop. अगर बारिश रुकेगी, what does it mean? It may or may not stop. We will be able to go for a walk. है ना? तो हम लोग वॉक के काबिल हो जाएंगे या वॉक पे जा पाएंगे.
But there is a no certainty. It's all about the uncertainty. कि अगर बारिश रुकेगी, but अगर shows what? It shows uncertainty. It Sir, may your stop screen or is it may. not visible. I have already showed the screen. My screen is Yes, sir, already it's on. not visible. Yeah, sir, Screen it's is- visible now. It's Okay, the visible now. conditional one. Conditional one is here. You can take a look at the conditional one as well. Here. Some of the sentences are here in the conditional one. Conditional one, we are not sure about the future, whether it will happen or not. We don't know. It's all about the probability. It's all about the possibility. It's all about the uncertainty. यकीन नहीं है. We are not sure about it. Okay. Like I said, if the price of oil comes down, more people will buy it. But if shows uncertainty, if the price of oil come down, अगर कीमत नीचे आएगी, it means it may or may not come down. I'm not sure about it. Okay. In the present, for the future, uncertain future. But the future is uncertain. Future का यकीनी है. I said if the price come down, or if the oil price come down, or if the petrol price come down, अगर पेट्रोल कीमत कम हो जाएगी, I don't know whether it will happen or not. More people will buy it. Okay. Whenever we are talking about the uncertainty about the future, we can use first conditional. See, some of the sentences are here for you. You can take a look. If I have enough money, if clause, I will buy a car, a main clause. कि अगर मेरे पास पैसे होंगे, it's uncertainty. होंगे नहीं होंगे, nobody knows whether you have it or not. You don't know because you are putting a condition with if. If shows uncertainty. So whenever there is an uncertainty, what does it mean? It means you are not sure about it, whether it's going to happen or not. Okay, that is called the first conditional. First conditional means when we are uncertain about the upcoming future. We don't know whether the future is going to be true or not. I told you there are three types of conditions we have. Basic, apart from the zero conditional. Zero conditional is follow the general truth. Yesterday I told you zero conditional is talking about the general truth, like if you heat the water, it boils. When one action follows another action directly, indirectly, or directly, like a general truth. So one action follows another action. That is why we call it zero conditional. Like I said, when the phone rings, dog barks, or if the phone rings, dog barks, or if the doorbell rings, dog barks. Or I told you yesterday as well, if it rains, my roof leaks. When one actions automatically follows another action, it's called the zero conditional. Which means I'm not taking any part in it. I'm not doing anything intentionally like I'm doing in the first conditional. First conditional, I am becoming a part of it. It means I'm doing something deliberately. मैं कुछ कर रहा हूँ जानबूझ के, or something is happening deliberately. Okay. The main types we have 1, 2, 3. Type 1, type 2, type 3, and type 2 and type 3 we can mix, and it is called the mixed conditional as well, where we can mix third and second conditional usually or normally. This is what we are doing. So remember that whenever we are talking about the first conditional, we are not sure about it. If it's putting a condition, uncertainty. Hoga, nahi hoga, whether it will happen or not, you don't know, I don't know. I'm just putting a condition. If means I am putting a condition. I said if I lose my job, what does it mean? I'm not certain about it. If I lose my job, what does it mean? Future certainty. I'm not sure about the future certainty. I said if I lose my job, I will go abroad. Like I can ask a question, what will you do if you lose your job? If again is putting uncertainty, अगर आपकी job चली जाएगी, it's mean you may lose or you may not lose it. शायद चली जाए, शायद ना भी जाए.
I said, if what will you do if you lose your job? Future, unpredictable future, uncertain future, when the future is not certain. So we can talk about the first conditional over here. You need to remember that the first conditional we are using when we are not sure about the future. If means the future is not certain. Hoga nahi hoga, nobody knows. Like I said, if I lose my job, it depends on whether 50-50. I don't know whether I will lose or not. If I lose my job, I will go abroad. I said, what will you do if you lose your job? Type 2. What is type 2? Type 2, it's when we are imagining a situation in the present. Tasawwur, what we call the imaginary situation. That is unreal present. When the present is unreal, there is a no certainty. There is a no certainty. It's impossible in the present. I said, what would you do if you lost your job? आप क्या करते अगर आपकी जॉब चली जाती? It's imaginary. You haven't lost your job yet. आपकी जॉब अभी तक गई नहीं है. I'm just imagining a situation in the present. Present में मैं क्या कर रहा हूँ? I'm imagining it. I said, what will you do if you lost your job? आप क्या करते अगर आपकी जॉब चली जाती? This is what I'm imagining. So what would you do in that position if that would happen? What would you do? If this happens, what would you do? That is the imagination in the present. That is unreal. That is no certainty in the future. Future की certainty नहीं है. It's all about the present. Like I said, if I lost my job, I would go abroad. अगर मेरी job चली जाती तो मैं abroad चले जाता. That is all I'm imagining as well. Because you are asking me the imaginary question, so I am also imagining. Because you are asking, what would you do if you lost your job? In the whenever we are imagining the present, whenever we are talking about the unreal present, that is the past simple or the past continuous, we can ask question. If you're talking about the unreal past, something was impossible in the past, a situation or consequences we imagined in the past. Like I said, what would you have done if you had lost your job? आप क्या करते अगर आपकी job चली गई होती in the past? Like I said last year, what would you have done if you had lost your job last year? I said if I had lost my job last year, I would have gone abroad. अगर पिछले साल मेरी job चली गई होती तो मैं abroad चला गया होता. Something like that. Imagining past, imagining present, and uncertain future. We have basic three conditionals. Uncertain future, unreal past means imaginary present, unreal present, imaginary present, that is unreal past, unreal present, imaginary present, and unreal past, it's imaginary past. We have three type of conditions over here. Some of the example is in front of you. If I'm not busy tomorrow, I will help you. If shows what? अगर मैं कल busy नहीं होऊंगा, it's been 50-50. I don't know. I may be busy. I may not be busy. हो सकता है मैं busy हूँ, हो सकता है मैं ना भी हूँ. That is the uncertain future. That is why I'm using if 50-50 chances. So whenever we are using 50-50 chances, we are using if means the uncertain future. The future is uncertain, not certain, not sure. I'm not sure about it. Okay. So basic three conditional we have. Acha, what else we are doing? Sometime we are mixing type 2 and type 3 as well. Imaginary present and imaginary past. Both we can mix, and these are called the mixed conditional. Like one part, like a one main clause I'm taking from the third conditional, and one if clause I'm taking from the second conditional. Like I said, if I had lost my job, I would be worried. If I had lost my job, I would be worried now. अगर मेरी जॉब चली गई होती तो आज मैं अभी मैं परेशान होता. So what we are mixing imaginary past and imaginary present. Would have the main clause we are taking from the third conditional, and the if clause we are taking from the second conditional. We are mixing them. We can mix them as well. That is called the mixed conditional. Okay. Okay, type 1. Let's talk about the type 1. What can we do in a type 1? Okay, I'll explain you. In a type 1,
we use if clause with the present tenses. If के साथ we can take all the present tenses like a present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Or on the other side, we can take will normally. Usually, we take will in the main clause. If clause, we are using present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Like I am giving you an example of a sentence. Like I said, if I am better tomorrow, I will get up early. If I am better tomorrow means अगर मैं कल बेहतर होऊंगा, not मैं कल में बेहतर हूं. If shows the future, uncertain future. If shows uncertain future, कल में बेहतर होऊंगा नहीं होऊंगा, I don't know. It's 50-50, uncertain future. If shows uncertainty. If I am better tomorrow, I will get up early. अगर मैं कल बेहतर होऊंगा, I'm using am, I'm not using will. Why? Because if is already showing the future time. Whenever we are using if with the present tenses is talking about the future. if को अगर हम present tenses के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो future की बात करता है, present की नहीं बात करता, but that is uncertain future. That is not a certain future. ये वो future है जो certain नहीं है, uncertain है. You need to keep in your mind. Whenever we are using present simple with the action, possession, state, whatsoever, it talks about the future. It doesn't talk about the present. ये भी आपको मालूम होना चाहिए. अगर मैं present simple के साथ I am using the main verbs, it talk about the future. है ना? Suppose if I said if I have headache, what does it mean? अगर मेरे दर्द होगा, अगर मेरे सर में दर्द होगा, I'm talking about the uncertain future. In the main clause, I can take will. Like I said, I will take an aspirin. मैं aspirin ले लूंगा. But I'm talking about if with present simple. We do not use if with will. If के साथ we do not use will. अच्छा, if के साथ will we are using in a different position. I'll teach you. Then if you will come, that is also possible. And how can we use if plus will or if plus would? Usually we are not using if plus will or if plus would. If plus will and if plus would we are not using, but we are using in a certain position. खास जगह पे हम if plus will or if plus would we can use. Okay. Okay. Next, like I said, if I have headache, I will take an aspirin. What does it mean? अगर मेरे सर में दर्द होगा तो मैं aspirin ले लूंगा. That is the future uncertain future. Or with the present simple, I said if I finish my work early, what does it mean? अगर मैं अपना काम जल्दी खत्म कर लूंगा, that is also referring to the future, not to the present. Although the sentence is in a present, but the if takes it into the uncertain future. अगर मैं अपना काम जल्दी खत्म कर लूंगा, I said if I finish my work early, I will go home. मैं घर चला जाऊंगा. Or we can use the present continuous as well. Like I said, if he is standing in the rain, अगर वो बारिश में खड़ा हुआ है, he will catch a cold. उसे ठंड लग जाएगी. Okay, we can use present continuous as well for with the future meaning. Here, if he is standing, अगर वो here we are using if with the present meaning. He will catch a cold अगर वो खड़ा हुआ है. Or we can use present perfect as well. If he has arrived at the station, अगर वो स्टेशन पहुंच गई है, she will be here soon. वो यहाँ जल्द होगी. Or we can use present perfect continuous as well. Like I said, if he has been traveling all night, he will need a rest. अगर वो पूरी रात traveling कर रही है, she will or he will need rest. तो उसे आराम की जरूरत होगी. Remember this, we can use all present tenses with all main verbs. Whether it's an action, state, possession, feeling, guessing, changing, no changing whatsoever. We can use all the main verbs with if in present simple. Or we can use sometime if plus modals. अच्छा, if के साथ we can add some modals like a can. I said if I can afford it, I'll buy it. अगर मैं afford कर सकता हूँ मैं खरीद लूंगा. Can we can use with if. If I can, I said if I can work hard, I'll do it.
अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ मैं करूंगा. I said if I can speak well, I'll try my best. That is what we can do. Okay. Like I said once, if it rains, again I'm talking about the certainty. Okay. One more thing we can also do. देखें, in will clause, it doesn't mean we can use only the future simple. We can use future continuous and the future perfect as well. Main clause में we cannot use only present future simple. We can use future continuous and the future perfect as well. Main clause में like will के अलावा like a future simple, apart from future simple, we can use future continuous and the future perfect as well. आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेन क्लॉज में जरूरी नहीं है यू आर यूजिंग द विल ऑल द टाइम. आप फ्यूचर परफेक्ट भी लगा सकते हैं और यू कैन यूज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस एज वेल और द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल. आपको ये पता होना चाहिए. मेन क्लॉज में वी कैन यूज फ्यूचर सिंपल, वी कैन यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस, वी कैन यूज फ्यूचर परफेक्ट और वी कैन इवन यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. जिस तरह प्रेजेंट में हम चारों टेंस यूज कर रहे हैं तो इसी तरह फ्यूचर में हम चारों टेंस यूज कर सकते हैं ऑन द मेन क्लॉज. इफ क्लॉज में प्रेजेंट के चारों टेंस आएंगे. हाँ बिल्कुल सही. इफ इट रेन्स ही विल बी वेट. अगर बारिश होगी मींस व्हाट? अनसर्टेनिटी. यू आर नॉट श्योर. ही विल बी वेट तो वो गीला हो जाएगा. व्हाट इज इट? दैट इज द मेन क्लॉज. जरूरी नहीं है मेन क्लॉज विल गो विद द विल. मेन क्लॉज कैन गो विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस. मेन क्लॉज कैन गो विद द फ्यूचर परफेक्ट. मेन क्लॉज कैन गो विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस और मेन क्लॉज कैन गो विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. जिस तरह इफ के साथ प्रेजेंट के सारे टेंसेस आ सकते हैं इसी तरह फ्यूचर के साथ फ्यूचर के सारे टेंसेस आ सकते हैं. यू नीड टू रिमेंबर दिस. लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल. पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम. है ना. एक साइड पे मैंने प्रेजेंट सिंपल लिया, दूसरे साइड पे मैंने फ्यूचर सिंपल ले लिया. अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रुकूंगा या हम घर पे रुक जाएंगे. ओके. Like I am giving you another example of the future continuous with the present simple. Like I said, if he gets the job, अगर उसको जॉब मिल जाएगी, he will be going abroad, तो abroad जा रहा होगा. See, I'm using future continuous. If you don't run, see that is the present simple. अब उसके आगे मैं future perfect use करूंगा. The bus will have left. बस जा चुकी होगी. See, I'm not using future simple. I can use future perfect as well. Like I'm giving you a future perfect continuous as well. One example. If I stay till May, I'll have been working here for 20 years. अगर मैं यहाँ मई तक रुका तो मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँगा. Future perfect continuous. Are you getting my point? It is not necessary to use future simple. You can use future continuous. We can use future perfect or we can use future perfect continuous as well. If के साथ अगर हम चारों टेंस यूज कर सकते हैं so the will we can do the 4 tenses as well. Will के भी चारों tenses हम यूज कर सकते हैं in the main clause with the if clause. You need to know this. I'm telling you, maybe you are thinking only the will come. No, it is not necessary will only come. Future perfect can come, future perfect continuous can come, future continuous can come, and future simple can come. All can come. It doesn't mean only you are thinking, okay, one of the tenses is coming. No, all tenses can come. That is the first conditional. This is what I'm talking about, the first condition. Then you have some example on your screen. You can also say, if she doesn't, we can go to the negative side both. अच्छा दोनों both side we can go to the negative, both side we can make a question. अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए what we will need to do, हमें will को बाहर डालना पड़ेगा. Because if clause cannot make a question, if से हम question नहीं बना सकते, है ना. Like I said, what will you do if you lose your job? Or will you come if you get late? ना मतलब आप आएंगे अगर आप लेट हो गई तो. Will you come if you get late? तो अगर if you need to make a question, then you need to bring the will clause first. will के clause को हमें पहले लाना पड़ेगा अगर आपको question बनाना है. In a negative, आप
मेन क्लॉज को भी नेगेटिव कर सकती हैं, यू कैन टर्न द मेन क्लॉज इनटू नेगेटिव और यू कैन टर्न द इफ क्लॉज इनटू नेगेटिव। आप नेगेटिव दोनों क्लॉज को कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को मैं आपको विल लेना पड़ेगा। इफ वाले क्लॉज को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यू नीड टू नो दिस। इफ क्लॉज वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द क्वेश्चन, इफ के क्लॉज को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें विल को करना पड़ेगा। इफ यू नीड टू आई आस्क अ क्वेश्चन, विल यू कम इफ यू गेट लेट, विल यू कम इफ आई इनवाइट यू, क्या आप आएंगे अगर मैं आपको इनवाइट करूं? ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट, that is called the first conditional, type 1. The first conditional, this is the type 1 conditional. Like I said, if the weather clears we will go for a walk, इसको हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। Like I said, if the weather doesn't clear we won't go for a walk, अगर मौसम क्लियर नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, और अगर मौसम क्लियर होगा तो हम जाएंगे। both you can convert negative or both you can convert into the positive as well. Sir, is it right? Will you help me if I am busy? Yeah, right. We can convert Okay, into the sir. will into the question, we cannot convert the if clause in a question. if clause को हम question नहीं बना सकते। अगर हमें question बनाना है, if you want to convert into the question, we will have to convert the will into the question interrogative। हम will को interrogative कर सकते हैं, if वाले clause को interrogative नहीं कर सकते। अच्छा, one more thing, जरूरी नहीं है कि only the will come, कि हर दफा main clause में will ही आए, it's not necessary। यानी इफ क्लॉज के आगे अगला वाला जुमला विल में आए जी नहीं, आप मॉडल वर्ब भी लगा सकते हैं जी, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। आप इफ क्लॉज के साथ विद इफ क्लॉज यू कैन यूज ऑल मॉडल्स एज वेल। आप ये मत समझे कि इफ के साथ हमेशा विल ही आएगा, इफ के साथ आप कैन, कुड, मे, माइट, शुड, must, you can use all model verbs as well। Like I'm giving you one example, I said if she finishes early she can go home, see, or she may go home, she might go home, she should go home, she must go home। we can use all model। likely, लेकिन वहां पर भी मॉडल क्या है? मॉडल इज टॉकिंग अबाउट द अनसर्टेनिटी, लाइकली आउटकम शायद ऐसा हो, है ना। मैं कह रहा हूँ इफ शी फिनिशेज अर्ली और इफ यू फिनिशेज अर्ली और इफ यू फिनिश अर्ली, अगर आप अपना काम जल्दी कर लें आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, और यू मे गो होम, और शी मे गो होम, और यू शुड गो होम। एडवाइजेबिलिटी, आई कैन गिव यू एडवाइस, तुम आपको जाना चाहिए, और यू मस्ट। तो इन द टाइप 1, द वेरिएशन 1, तो विल तो हम यूज कर सकते हैं ऑल द टेंसेस ऑफ द फ्यूचर, विल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इफ के साथ हम प्रेजेंट के चारों टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन बट वी कैन आल्सो यूज मॉडल्स इन द मेन क्लॉज, यानी विल की जगह आप मॉडल्स भी लगा सकते हैं, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शुड। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम यू आर यूजिंग द विल, और विल बी प्लस आईएनजी, और विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। लाइक इफ शी इज अराइविंग टुडे शी मे कॉल मी, अगर वो आज आ रही है तो वो मुझे फोन कर ले, शायद वो मुझे फोन कर ले, और शी कैन कॉल मी, वो मुझे फोन कर सकती है, पॉसिबिलिटी, और शी शुड फोन मी, उसको मुझे फोन करना चाहिए। और इफ शी हैज अराइव्ड, अगर वो पहुंच गई है, सो यू कैन यूज कैन, कुड, मे, माइट, शुड एंड मस्ट। और इफ शी हैज बीन वेटिंग, अगर वो इंतजार कर रही है, शी शुड फोन मी, शी कैन कॉल मी, शी कुड कॉल मी, शी मे, शी माइट, और शी मस्ट। देखें, let me tell you one thing, I am teaching you in little detail, I'm teaching you with the type 1 variation as well, I'm teaching you the type 1 variation, type 1 variation 1, type 1 variation 2 and type 1 variation 3 as well।
अच्छा, Excuse me, sir. will in the main clause express the certainty or non-certainty? If you do not feel the certain enough to use will, we want to express the idea of necessity, we can use other model. अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सर्टेनिटी हो तो विल यूज करें. अगर सर्टेनिटी कम है, यकीन कम है, तो आप मॉडल लगा सकते हैं. कैन का मतलब है यू आर, वी आर फ्री टू. कुड मीन वी वुड बी एबल टू, शायद इस काबिल हो जाए. मे मीन इट इज पॉसिबल, माइट मीन इट इज पॉसिबल. शुड मीन्स इट एडवाइजेबल. आउट टू मीन्स एडवाइजेबल. मस्ट मीन नेसेसरी. लाइक आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस. देखिए मेन क्लॉज में विल नहीं यूज कर रहा, बिकॉज विल इज टॉकिंग अबाउट द सर्टेनिटी and non-certainty. But if we don't feel the certain enough, we use will and we want to express the idea of necessity. अच्छा, अगर हमें यकीन ना हो तो फिर हम क्या करें? We can use the modals like can, could, may, might, should, must. Like I'm giving you one sentence. If it is fine tomorrow, like weather I'm talking about. If weather is fine tomorrow, है ना, मैं बोलता हूँ अगर कल मौसम अच्छा होगा. ओके, अब मैं यहाँ पे विल नहीं यूज कर सकता. मैं कहता हूँ वी कैन गो आउट. इट मीन वी आर फ्री टू गो आउट. हम बाहर जा सकते हैं. आई एम नॉट यूजिंग विल. मैं सर्टेनिटी यूज नहीं करता, यानी यकीन, सर्टेनिटी और नियर सर्टेनिटी आई एम नॉट यूजिंग. मैं बोलता हूँ वी कुड गो आउट. वी कुड, वी वुड बी एबल टू, हम इस काबिल हो जाएंगे बाहर जाने के. वी मे गो आउट, शायद हम बाहर जाएं. इफ वेदर इज फाइन टुमारो, वी शुड गो आउट, हमें बाहर जाना चाहिए. एडवाइजेबिलिटी, इट्स मीन आई एम गिविंग यू एडवाइस. और इफ वेदर इज फाइन टुमारो, अगर कल मौसम अच्छा होगा, वी मस्ट गो आउट, हमें जरूर जाना चाहिए. इट्स मीन इट्स नेसेसरी, लाजमी है. सो विद द कंडीशनल वन वी कैन यूज मॉडल्स एज वेल. जरूरी नहीं है ऑल द टाइम यू आर यूजिंग विल. आप ये समझे कि मेन क्लॉज में सिर्फ विल ही आएगा, है ना, लाइक अ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. आप ये मत समझे. यू कैन यूज ऑल द मॉडल वर्ब एज वेल. आप मेन क्लॉज के अंदर मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, यू कैन यूज ऑल ऑफ देम. जी. अच्छा, यू कैन डू वन मोर थिंग एज वेल. आप मॉडल को कंटिन्यूअस और परफेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकती हैं. लाइक आई सेड, इफ आई हियर फ्रॉम टिम, अगर मैंने टिम से कोई बात सुनी, आई मे बी लिविंग टुनाइट, तो मैं आज रात जा रहा हूँ. Models को you can convert into the continuous, or you can convert into the perfect as well. Like I said, if he is in New York, he may not have got my letter yet. अगर वो न्यूयॉर्क में है तो हो सकता है उसे मेरा लेटर अभी तक ना मिला हो. परफेक्ट है ना, बिकॉज मॉडल कैन बी कंटिन्यूअस, मॉडल कैन बी परफेक्ट, मॉडल कैन बी फ्यूचर और मॉडल कैन बी प्रेजेंट. आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड इट. आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि मॉडल को हम कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं, परफेक्ट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं और फ्यूचर भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स. सही जी. अच्छा, टाइप 1 का वेरिएशन 2 भी है. टाइप 1 का वेरिएशन 2 क्या है? हम लोग अक्सर इफ के साथ शुड भी लगाए थे. आपने सुना होगा इफ यू शुड. ऐसे मैं बोलता हूँ इफ यू शुड. अच्छा, यहाँ इफ यू शुड का मतलब है बाय चांस, है ना. जैसे मैं बोलता हूँ इफ यू शुड मीट हिम, अगर आपका उससे मिलना हो जाए. सो व्हाट डज इट मीन? इफ के साथ हम शुड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं whenever we are doubtful. Okay, we can use if should. अच्छा, बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा भी मिलेगा कि लोग if हटा के जुमला डायरेक्ट should से शुरू करते हैं. ये भी कंडीशनल है. मैं बताऊं, should you see him, please give him my message. should you see him का मतलब क्या है? अगर आपका उससे मिलना हो जाए. if you should see him, should you see him, both are the same. if you should see him और should you see him, अगर आपका उससे मिलना हो जाए, give him my message, उसको मेरा मैसेज दे दीजिएगा. तो कभी कभार आपको इंग्लिश में ऐसा भी मिलेगा कि इफ नहीं लगेगा, शुड भी कंडीशनल है अगर जुमला शुड से स्टार्ट हो रहा है. इफ द सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम शुड यू सी हिम या इफ यू शुड सी हिम, है ना. मैं बोलता हूँ इफ यू शुड विन लॉटरी, अगर आपको लॉटरी जीतना हो जाए, और इफ यू शुड मीट हिम, इफ यू शुड कम अक्रॉस
तो इफ के साथ शुड जो है वो भी यूज हो सकता है व्हेन यू आर डाउटफुल। जब आपको डाउटफुल हो तो इफ के साथ आप शुड भी लगा सकते हैं, और इफ हटा के सिर्फ जुमला शुड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आई सेड, इफ ही कॉल्स टेल हिम आई विल रिंग बैक। अच्छा, टाइप 1 के साथ हम मेन क्लॉज के अंदर इंपेरेटिव भी यूज कर सकते हैं जी। जैसे मैं बोलता हूँ इफ ही कॉल्स टेल हिम, या इफ इट रेन्स कैंसिल द मैच। देख लें, हमने मेन क्लॉज में क्या लगा दिया, इंपेरेटिव। या आई सेड इफ ही गेट्स लेट कैंसिल द क्लास। अगर वो लेट हो जाए तो क्लास कैंसिल कर दो, है ना। मैं बोलता हूँ इफ द वोल्टेज इज लो शट डाउन द टीवी। अगर वोल्टेज लो हो जाए तो टीवी बंद कर दो। दैट इज लाइक दैट। तो मेन क्लॉज के अंदर आप इंपेरेटिव भी यूज कर सकते हैं। एक तरफ तो मॉडल हम यूज कर सकते हैं मेन क्लॉज में, एक विल के सारे टेंसेस यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप इफ के साथ जो है इंपेरेटिव भी यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू नो, है ना। मतलब इफ ही गेट्स लेट रिटर्न हिम। मैं बोलता हूँ अगर वो लेट हो जाए उसे वापस कर दो, है ना। बताऊँ, मैं नेगेटिव भी कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर वो लेट हो जाए तो उसे क्लास में मत आने दो। मैं बोलता हूँ इफ ही गेट्स लेट डोंट कम इनसाइड ऑफ क्लास, या इन क्लास डोंट लेट हिम कम इनसाइड ऑफ क्लास। तो अगर हम चाहें तो इफ के साथ हम इंपेरेटिव भी लगा सकते हैं, इफ के साथ हम शुड भी लगा सकते हैं। लाइक आई सेड इफ यू शुड राइट टू हर सेंड हर माई लव। अगर आपका उसे लिखना हो, अगर आप उसे लिखें, इस मीन बाय चांस, तो इफ के साथ शुड जब लगता है तो जुमला पोलाइट हो जाता है। मैं बोलता हूँ इफ यू शुड गो टू नैरोबी गो एंड सी द स्नेक पार्क। अगर आपका नैरोबी पार्क जाना हो जाए, वी वांट टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट सजेशन एंड टेल पीपल व्हाट टू डू। अगर आप बहुत पोलाइटली कोई बात कहना चाह रहे हैं तो आप इफ के साथ शुड भी लगा सकते हैं, और मेन क्लॉज के अंदर इंपेरेटिव भी दे सकते हैं, या आप नहीं भी दें। जैसे मैं बताऊँ कैंसिल द मैच इफ इट रेन्स। मैच को कैंसिल कर दें अगर बारिश हो, या मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स कैंसिल द मैच। तो हम मेन क्लॉज में कि में इंपेरेटिव भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लॉज में तो हम इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल ही यूज करेंगे। रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस, है ना। मैं बोलता हूँ इफ यू शुड गो टू नैरोबी, और इफ यू गो टू नैरोबी, अगर आप नैरोबी जाएं, गो एंड सी द स्नेक पार्क। अगर शुड लगा रहे हैं तो आपने अपनी बात का नरम करनी है, अगर आपने बात में नरमी डालनी है कि अगर आपका जाना हो जाए, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ अगर आपका पोस्ट ऑफिस जाना हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ इफ यू गो टू पोस्ट ऑफिस, या मैं बोलता हूँ इफ यू शुड गो टू पोस्ट ऑफिस, है ना। मैं बोलता हूँ पोस्ट माई लेटर, मेरा लेटर पोस्ट कर दें। सही है जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। टाइप 1 की मैं वेरिएशन भी आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ ना। टाइप 1 वेरिएशन 1, टाइप 2 वेरिएशन 2, टाइप 1 वेरिएशन 3। बोर तो नहीं हो रहे? आरंट यू गेटिंग बोर्ड विद द डिटेल? No, Maybe sir. you are No, sir, getting but it's much confusing. No, sir. अच्छा, I'll revise, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ ना आपको। देखें, फर्स्ट कंडीशनल में इफ के साथ प्रेजेंट के सारे टेंसेस आएंगे। I'll explain you उर्दू। इफ के साथ प्रेजेंट के सारे टेंसेस आ सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही है जी। दूसरी साइड पे फ्यूचर के सारे टेंसेस आएंगे, आ सकते हैं, यानी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही है जी। अच्छा, इफ के साथ मेन क्लॉज तो वैसे ही रहेगा, वही सारे टेंसेस, लेकिन इफ के में मेन क्लॉज में आप विल के बजाय मॉडल भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये भी आ सकता है इफ के साथ, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ इफ यू आर रेडी वी कैन स्टार्ट। जरूरी नहीं है कि विल लेकर आए आप। दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ना, बिकॉज़ मे बी यू आर थिंकिंग विल के बगैर नहीं बनेगा मेन क्लॉज। नो, यू कैन मेक विदाउट विल। आप मॉडल वर्ब पे लगा दें साथ में विद ऑल प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस आप मॉडल वर्ब भी लगा सकती हैं, आप प्रेस एक्सप्रेशन भी लगा सकती हैं। मैं बोलता हूँ इफ ही डजंट हैव
इफ ही डजंट कम वी विल हैव टू गो। देख लें, हैव टू आ गया, विल के साथ फिक्स एक्सप्रेशन आ गया, विल बी एबल टू। आई सेड इफ यू कीप लर्निंग यू विल बी एबल टू स्पीक। देखें बी एबल टू आ गया विल के साथ, एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं लाइक बी एबल टू, विल हैव टू, यू कैन यूज इट। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू। कि आप बोलेंगे सर वो विल ही आएगा, नहीं भाई वहां मॉडल भी आ सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, जरूरी नहीं है मॉडल और विल आए, आप इंपेरेटिव भी लगा सकती हैं। जी, आपने बोला इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो, अगर बारिश होगी, मैं इसके आगे फ्यूचर टेंस भी लगाऊंगा। मैं बोलता हूं मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो। अगर बारिश होगी मैं मॉडल लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स यू मस्ट कम बैक, तुम जरूर वापस आ जाओ। सही है जी। अब मैं मेन क्लॉज में क्या करता हूँ, इंपेरेटिव लगाता हूँ। मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स कैंसिल द मैच। अब देख लें, मैंने मेन क्लॉज चेंज कर दिया, ना विल लगाया ना मॉडल लगाया, मैंने इंपेरेटिव लगा दिया। Are you getting my point? That is why I'm trying to teach you. So you will get the good point कि with if with present tenses के साथ हम मॉडल भी लगा सकते हैं, फ्यूचर टेंस भी लगा सकते हैं और इंपेरेटिव भी लगा सकते हैं। Maybe it's a little confusing, but I am teaching you in detail. So you will come to know. आप समझेंगे सिर्फ will ही आएगा, नहीं भाई मॉडल भी आ सकते हैं, नहीं भाई इंपेरेटिव भी आ सकते हैं, है ना। मे बी यू आर थिंकिंग कि फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट के साथ will ही आएगा। Who said that? जी नहीं, जरूरी नहीं है, मॉडल भी आ सकते हैं, इंपेरेटिव भी आ सकते हैं। एक बात और भी बता दूं आपको, कुछ इंग्लिश में आपको ऐसा भी मिलेगा कि इफ नहीं मिलेगा, इफ की जगह शुड मिलेगा। जी, जैसे मैं बोलता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर ऑफर प्लीज कॉन्टेक्ट अस। सही है ना। मैं बोलता हूँ अगर आप मेरी ऑफर में इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। अच्छा एक बात और भी बता दूं, अच्छी इंग्लिश के अंदर वो इफ हटा के सीधा शुड लगाते हैं, लिखा होता है शुड यू बी इंटरेस्टेड इन आवर ऑफर प्लीज कॉन्टेक्ट अस। जी हाँ, सेम मीनिंग है। हाँ, मैं बताऊँ ना इफ यू आर But इंटरेस्टेड it इन माय means we ऑफर। can use, Screen is not does visible. it mean we can use model in both the clause? वी कैन यूज मॉडल। यहाँ पे शुड जो है वो इफ की जगह आ रहा है। इफ हटा के अगर मैं बोल दूं शुड यू कम, कम शुड यू कम टुमारो, मतलब इफ यू कम टुमारो की जगह मैं बोल दूं शुड यू कम टुमारो, द सेम मीनिंग। जी, Okay, मगर sir. बहुत रेयर है, It's कम not. कम, लेकिन बहुत कम यूज But होता है। it's going to be polite. या अगर आपका आना हो, हाँ Okay, इट्स sir. गोइंग टू बी वेरी पोलाइट। मैं बोलता Yeah, हूँ sir. इफ यू शुड कम टुमारो, अगर आप कल आ जाएं या अगर आपका कल आना हो, तो अगर आप पोलाइट करना चाहें तो इफ के साथ आप शुड भी लगा सकते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ अगर आपका मार्केट जाना हो या हो जाए, तो मैं बोलता हूँ इफ यू शुड गो टू मार्केट प्लीज बाय सम फ्रूट्स फॉर मी, या बाय सम फ्रूट फॉर मी, मेरे लिए कुछ फ्रूट्स खरीद लीजिएगा। वैसे तो इफ यू गो टू द मार्केट भी सही है, अगर आप मार्केट जाएं, लेकिन अगर आपने पोलाइट करना है तो आप शुड लगा दें उसके साथ। ओके, Okay, sir. तीन तीन ऑप्शन पढ़ लिए हमने फर्स्ट कंडीशनल के अंदर। विल भी आ सकता है, मॉडल भी आ सकते हैं और इंपेरेटिव भी आ सकता है। ये आपने याद रखना है। Yeah, हाँ, sir. It's clear now. Yes, sir. जरूर। If you have time, you must do work. It's right sentence. हाँ, वेरी गुड। वी कैन यूज, या वी कैन यूज मॉडल। देखें इफ के आगे मॉडल भी लगा सकते हैं, हम फ्यूचर के टेंस भी लगा सकते हैं, हम इंपेरेटिव भी लगा सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो, अब देखें मैंने विल लगा दिया। मैं बोलता हूँ इफ इट Right. रेन्स यू शुड नॉट कम, मैंने शुड लगा दिया, मॉडल लगा दिया। मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स डोंट कम, देखें इंपेरेटिव लगा दिया मैंने। मेरी मर्जी है, तीन वेरिएशन है। चाहूँ तो विल के सारे चारों ले लूँ, चाहे मॉडल्स ले लूँ, चाहे मैं इंपेरेटिव ले लूँ, इट्स अप टू मी। तो आपको पता Okay. होना चाहिए ना। देखें लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप यही सोचती रहेंगी कि विल ही आएगा तो आप बाकी लगा ही नहीं पाएंगी। Yes, sir. मे बी यू आर थिंकिंग ओनली द विल कम, बट हु सेड ओनली द विल कम? मॉडल भी आ सकते हैं, इंपेरेटिव भी आ सकता है। मॉडल कैन कम, इंपेरेटिव कैन कम। जी, इन द फर्स्ट कंडीशन आई एम टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट की भी तीन वेरिएशन है। जी, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि हम इफ नहीं लगाते, हम दूसरे वर्ड लगा देते हैं, वो भी कंडीशनल दे रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ बी देयर ऑन टाइम अदरवाइज यू विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, वरना, वरना क्या है, ये भी कंडीशन है। जैसे मैं बोलता हूँ टर्न ऑफ द टीवी अदरवाइज आई विल ब्रेक इट,
ये क्या है? ये भी कंडीशनल है जी। आप क्या समझ रहे हो? ओनली द इफ इज कंडीशनल। और एल्स भी कंडीशनल है। मैं बताऊं पुट दैट डाउन और एल्स स्मैक यू, नीचे रख दो ये वरना मारूंगा तुम्हें। और एल्स क्या है? ये भी कंडीशनल है। यस। स्टॉप शॉटिंग और यू विल वेक द नेबर्स। और क्या है? दिस इज द कंडीशनल एज वेल। ये भी कंडीशन दे रहा है Answer. कि भाई शाउटिंग बंद करो Yes. वरना तुम पड़ोसियों को उठा दोगे। एंड भी लगा सकते हैं हम। मैं बोलता हूँ प्रोवाइड द मटेरियल एंड वी विल डू द जॉब। मैं बोलता हूँ मटेरियल प्रोवाइड करो और हम अपनी जॉब करेंगे। ये भी सारी क्या है? दीज आर द कंजंक्शन एज वेल। ये भी तो शर्त लगा रहे हैं। इफ क्या कर रहा है? डू यू नो? इफ जो है वो शर्त लगा रहा है। इट्स पुटिंग अ कंडीशन। जरूरी नहीं हम ऑल द टाइम इफ यूज करें। हम एज लॉन्ग एज भी यूज कर सकते हैं, हम अनलेस भी यूज कर सकते हैं, हम व्हाट इफ भी यूज कर सकते हैं, है ना? वी कैन यूज व्हाट इफ, अनलेस, इन केस, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, वेदर यू डू इट और नॉट, ये भी कंडीशनल है। डू नॉट थिंक ओनली द इफ इज कंडीशनल, बट if is more common than other conditional. Yes, Miss Hina, do you have any question? I think you are raising your Yes, hand. sir. Ji. Sir, like we are using we are using should in conditionals. Like we can use should in every type of conditionals or No. only Whenever you are being polite, जब आप नरमी से बात कर रही हो, yes, sir. Like tactful, कि अगर आपका जाना हो जाए by chance, when you are very polite, all the time we are not using should with if. If के साथ हम should लगाते हैं whenever we are being polite, बहुत नरमी से बात कर रहे हैं। जब मैं बता ना if you should go to the market, अगर आपका मार्केट जाना हो जाए, है ना? yes, ब्रिंग, sir. तो तब लगाएंगे। इफ के साथ शुड हर जगह नहीं आएगा। वी आर नॉट यूजिंग ऑल द टाइम। शुड को हम इफ के साथ हर कंडीशन में नहीं लगाएंगे। व्हेनेवर वी आर बीइंग पोलाइट, Yes, sir. Like we तो are आप लगा। using like if sir, I wanna ask something. Like we are using if and like if you go to market, like should you go to market? Like we हाँ, are शुड यू गो using टू should मार्केट in और the इफ यू beginning शुड, instead शुड of if. अगर, या इंस्टेड ऑफ शुड यू गो टू द मार्केट, सेम मीनिंग इन उर्दू। अगर आपका मार्केट जाना हो जाए, शुड यू गो टू द Sir, we मार्केट, इफ can यू गो टू द use मार्केट। should in this should in every type of conditionals instead नो of नो if. नो नो, इन वेरी This is व्हेनेवर यू आर बीइंग a पोलाइट, जब आप पोलाइट हो रही oh, हो, व्हेनेवर यू आर बीइंग पोलाइट, बस। अदरवाइज नहीं okay, Otherwise, आएगा। we sir. can, sir, otherwise we can use will. Yeah? will we are using in the main clause, not with if. No, if sir, के साथ if, will sorry. नहीं Otherwise, आएगा। we use sir like others like देखें if conditional के sentence साथ, like if, if के साथ unless. let me explain. if के साथ हम प्रेजेंट के चारों टेंस यूज करते हैं, हम मॉडल यूज नहीं करते नॉर्मली। लेकिन शुड एक वाहिद है जो नरमी के लिए आता है, दैट्स इट। वरना हम शुड नहीं लगाते। अगर आप नहीं भी लगाएं तो भी जुमला सही है। इफ यू गो टू द मार्केट ना, Sir, it mean इफ यू गो टू if द is मार्केट, more common. या इफ इज मोर कॉमन देन एनीबडी एल्स। और भी हैं, एज लॉन्ग एज, वेदर और नॉट, व्हाट इफ, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, सो मेनी अदर कंडीशंस आर देयर। कंडीशन और भी हैं, नॉट ओनली Okay, then. इफ, बट इफ इज मोर कॉमन। अच्छा, कंडीशनल और भी हो सकते हैं, अदरवाइज, ये भी कंडीशनल है। ये क्या है? इट्स गिविंग यू द कंडीशन, है ना? वरना, व्हाट इज वरना? वरना इज आल्सो अ कंडीशन। मैं मतलब डू इट, otherwise you will be slapped or somebody will slap you, your teacher will get, otherwise teacher will get angry, or else and otherwise क्या है? ये भी कंडीशनल है। जैसे मैं कहता हूं fail to pay they will cut your electricity, है ना? जुमला क्या है? if you fail to pay they will cut your electricity. अगर आप पेमेंट देने में नाकाम हो गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देंगे? they'll cut, वो काट काट देंगे। देंगे। तो अक्सर इंग्लिश के अंदर इफ हटा के जुमला डायरेक्ट इफ यू से जुमला डायरेक्ट शुरू करते हैं इंपेरेटिव से। फेल टू पे दे विल कट द इलेक्ट्रिसिटी। जुमला क्या है? इफ यू फेल टू पे, इफ यू फेल टू पे दे विल कट इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा जुमला है।
लेकिन शॉर्ट में भी लोग फर्स्ट कंडीशन में बोलते हैं फेल टू पे। जैसे मैं बताऊं, इफ यू टेल अस व्हाट टू डू वी विल गेट ऑन विद इट। अब इसमें क्या होगा, टेल अस व्हाट टू डू एंड वी विल गेट ऑन विद इट, हमें बताओ क्या करना है, हम वैसे ही कर लेंगे। जैसे मैं बताऊं, इफ यू डोंट स्टॉप ईटिंग स्वीट्स, मैं बोलता हूँ स्टॉप ईटिंग स्वीट्स और यू वोंट गेट एनी डिनर, वरना तुम्हें को डिनर नहीं मिलेगा। थ्रेट, धमकी। एडवाइस, मतलब टेक अ टैक्सी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, है ना। अदरवाइज क्या है, ये भी कंडीशन है, ये भी शर्त लगा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ टेक अ टैक्सी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, टैक्सी ले लो वरना ट्रेन निकल जाएगी। सेम लाइक इफ यू डोंट टेक अ टैक्सी यू विल मिस द योर ट्रेन। तो मैंने क्या कहा, टेक अ टैक्सी इंपेरेटिव यूजना शुरू कर दिया, अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन। लाइक सेम इफ यू डोंट टेक अ टैक्सी यू विल मिस योर ट्रेन। जैसे मैं बोलता हूँ ड्रॉप दैट गन और आई विल शूट यू, इफ में क्या बोलेगा, इफ यू डोंट ड्रॉप इट, इफ यू डोंट ड्रॉप इट आई विल शूट यू। ड्रॉप दैट पार्सल एंड आई विल किल यू, इफ यू ड्रॉप द पार्सल आई विल किल यू। देखिए इंपेरेटिव से बन रहा है जुमला, और लग रहा है एंड लग रहा है, दीज आर आल्सो कंडीशनल्स, क्योंकि ये भी शर्त लगा रहे हैं ना, वरना। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, sir. Yeah. देखिए आई एम गोइंग इन लिटिल डिटेल। देखिए वैसे तो मैं भी आपको सादा सा पढ़ाया था कि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आता है, एक तरफ विल आएगा, जान छूट जाती मेरी, बट आई डोंट वांट टू टीच लाइक दैट। व्हाट इज द गुड ऑफ माय टीचिंग देन? आई मस्ट बी डिफरेंट देन अदर्स, कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। लाइक आई एम टीचिंग, लाइक somebody else teaching, so I must teaching the variation in type 1 as well, कि टाइप 1 में भी वेरिएशन है। डू नॉट थिंक ओनली द विल कम, कि भाई एक तरफ फ्यूचर सिंपल आएगा, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा, दैट्स इट, बना दो जुमले। व्हाट इज द गुड ऑफ इट? हाउ कैन यू गिव द क्वालिटी? Yeah, That sir. is You teach each and everything in a top-notch way. No doubt. what is the good of it? Like I say, okay, use present simple and the future simple, and you can make the condition. How can you give the quality? You cannot give the quality unless I teach you the properly. अब आपको पता है should भी आ सकता है, मैं बताऊँ should you go to the market, you know, should you interested, you know, कि if की जगह हटा के हम should लगा सकते हैं, same meaning। Like as should you interested in the offer, let us know। आपको पता है if you should और if you are interested in the, all are the same। आपको पता है मेन क्लॉज के अंदर इंपेरेटिव भी आ सकते हैं, मॉडल्स भी आ सकते हैं, और विल के चारों जुमले भी आ सकते हैं। यू नीड टू नो दिस, यू कैन मेक इट मोर बेटर नाउ। इफ यू डोंट नो यू विल नेवर यूज इट। और आप फिक्स एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक अ विल हैव टू, विल बी एबल टू, यू कैन यूज इट। इफ के साथ हम कैन भी यूज कर सकते हैं, है ना। इफ यू कैन वर्क हार्ड, डू इट। बहुत अगर आप मेहनत कर सकते हैं, करें। इफ यू कैन स्पीक मोर सेंटेंस, यू आर वेलकम। इफ के साथ हम कैन भी यूज कर सकते हैं। इफ यू कैन, है ना, बोलते हैं ना कैच मी इफ यू कैन, पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो। यू मस्ट हैव हर्ड इट, कैच मी इफ यू कैन। अच्छा, इफ के साथ विल और वुड भी लगते हैं, आई विल टीच यू लेटर कि इफ के साथ विल और वुड कैसे लगेंगे, व्हाट डज इट मीन, उसका क्या मतलब है। यूजुअली विल जो है, इट्स नॉट कमिंग विद इफ एंड, यूजुअली विल एंड वुड आर नॉट कमिंग विद इफ के साथ विल और वुड नहीं आते, बट इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन विल एंड वुड आल्सो कैन कम विद विल। आई विल लेट यू नो हाउ। Okay, yes, Miss Kamal has been raising her hand. Yes, Miss Kamal, do you have any question? Yes, sir. Actually, I have a question, and I want let me know about that. Uh, if you hate ice, it mates. It Both melts. are present. Both are Both present. are. Simple tense. So, sir, I think that is That is a zero conditional. is it the first condition or zero condition? Zero conditional. देखें, let me tell you, zero condition में आप कोई काम नहीं करती, एक काम होता है, दूसरा खुद ही हो जाता है, automatic result. That is called Okay, the sir. automatic result. Sir, in zero condition, we have to use present simple only. Both side present simple. Both are Okay, sir. follow the general truth. ये general truth पे काम करता है। इसमें And आपने sir, कोई एक्शन नहीं किया। But we जैसे मैं can't बोलता हूँ use बारिश other होती है, than छत लीक हो जाती है ना। yes, sir. हाँ, ऑटोमेटिक। मैं टीवी देखती हूँ, सर में दर्द हो जाता है, so something like that. If I watch TV, I have headache, है ना, ऑटोमेटिक रिजल्ट। इसमें आप, you are not doing any function, it becomes a scientific or general truth, but that's why it's not too much common. Both side we use present simple, हम And दोनों साइड sir, पे present you simple यूज told करते हैं। that we can use should as a conditional. I think we can mostly we use should as a suggestion, advice.
या सजेशन एडवाइस वो तो मॉडल में है ना, बट विद इट शुड, इफ प्लस शुड इज डिफरेंट. इफ प्लस शुड इज बीइंग पोलाइटली. जब आप पोलाइटली कोई काम कहे ना, अगर आपका जाना हो जाए तो वी कैन, इफ यू शुड गो टू द मार्केट, इफ यू शुड कम लेट, अगर आप लेट हो जाएं लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा. अगर आपने पोलाइट, आप इफ को भी हटा सकती हैं, वो तो शुड यू गेट लेट, ये भी सही है. मगर Yes, दीज sir. आर नॉट कॉमन, यूजुअली पीपल डोंट नो. लोगों को पता नहीं है कि इफ हटा के हम शुड भी लगा सकते हैं, है ना. मतलब Yeah. शुड यू गेट लेट सेम, अगर आप लेट हो जाएं, है ना. इफ यू गेट लेट, आप बोले शुड यू गेट लेट, शुड को भी यूज कर सकते हैं की जगह, बट यूजुअली Sir, पीपल how डोंट can नो. you identify that that is a conditional and that is the advice? Means when we use should. Basically we are not using should for advice here, we are using should for being polite. यहाँ पे should जो हम if के साथ लगाते हैं, that is we are using for the being polite. polite होने के लिए लगा रहे हैं, advice देने के लिए लगा रहे हैं. हाँ, in the main clause if you are using should, that is the advice. Just जैसे मैं आपसे कहता हूँ, if your English is good, you should speak. if you are in a language class, you should speak English, ये advice है. लेकिन if के साथ जो should आ रहा है वो advice नहीं है, वो politeness के लिए आ रहा है. whenever you are being polite. हाँ, if के साथ should is a different meaning. हाँ, अगर main clause में should आ रहा है, that is the advice. That is the difference. हाँ, you need to know. Basically, I am trying to teach you in little detail, like a variation in type 1, type 1 variation first, variation second, variation third. आप ये मत समझे कि एक तरफ present simple लगा दो, एक तरफ future simple लगा दो, जान छूट गई. How can you give the quality then? You can't give the quality. That is what you need to know. All the model work we can use the future perfect, future continuous, future simple, future perfect continuous. We can use imperative as well. आपको ये भी पता होना चाहिए कि otherwise को भी हम use कर सकते हैं as a conditional. Yes. Otherwise पढ़ना, this is the conditional, क्योंकि ये भी शर्त लगा रहा है. वरना देखिए, otherwise these conditional are very easy to teach. मेरे लिए तो मुश्किल थोड़ी है. I can teach like your present simple, the future simple. Okay, I can practice this. That is why I'm teaching you details so you can make the more better sentences. आपको पता हो, you need to know these otherwise, or else, and, or. आपको पता or is also a conditional. और भी conditional है. or वरना के sense में. or I'll leave it. I said come inside or I'll leave. अंदर आ जाओ वरना मैं चला जाऊंगा. Something like that. Like otherwise. I said pay or I'll disconnect your electric. Pay कर दो वरना, है ना. मतलब stay quiet or I'll leave. This is also conditional, क्योंकि मैं शर्त इसमें भी लगा रहा हूँ. Conditional means there is a condition. I'm putting a condition. Unless भी क्या कर रहा है, जब तक नहीं, है ना. In Urdu if you call it, जब तक तुम, है ना, unless you try you can't speak well. This is also a conditional. As long as I am here, you can ask any question. This is also a conditional. I say what if he doesn't come, अगर वो नहीं आया तो, this is also a conditional. In case While until both are conditional. हाँ, both are the conditional. Unless and until both are the condition, क्योंकि condition दे रहे हैं ना ये, जब तक नहीं, है ना. Unless you work hard, है ना. मतलब in case you get hurt, use this medicine, ये भी conditional है ना. Whether you like it or not, do it. Actually, sir, I'm getting confused seriously because I heard first time. देखें, Yeah, we hear this मैंने, first time, that's why. हाँ, that is why I'm teaching you. Yeah, sir. पढ़ाऊंगा तो teaching में will come to know ना. अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, you Yes, will never sir. come to know. आपको पता ही नहीं चलेगा. Exactly, sir. हाँ, आप समझेंगे बस condition यही है. That is why I'm Sir, teaching you in a just a detail. minute, sir. I make some sentence, but I not right. So how can, sir, I know, am I right? Am I wrong? देखें, let That me tell you, reason it's, मैं आपको yeah, एक चीज बता देता हूँ. First of all, yeah, before you ask, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. yeah. I'll clear it in Urdu. देखें, Okay, दो okay. क्लॉज हैं हमारे पास कंडीशनल के. एक कहलाता है इफ क्लॉज, एक कहलाता है मेन क्लॉज. ओके. Right. इफ जी. क्लॉज के अंदर सारे प्रेजेंट के टेंस आप इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और इफ के साथ आप दो मॉडल भी लगा सकती हैं. एक कैन लगा सकती हैं और एक शुड पोलाइट के लिए लगा सकते हैं. कैन तो वही एबिलिटी के लिए लगा सकती हैं आप. अच्छा, दूसरे Okay. साइड पे आ जाता है मेन क्लॉज.
मेन क्लॉज में आप विल के चारों टेंस लगा सकती हैं, यानी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही है जी। मगर मेन Okay. क्लॉज के अंदर हम विल के अलावा मॉडल भी लगा सकते हैं, यानी कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यानी विल को आप हटा के ये सारे मॉडल भी हटा लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी वेरिएशन क्या है कि आप मेन क्लॉज के अंदर इंपेरेटिव लगा दें। मैं एक जुमला बनाता हूँ, एक में विल लगाता हूँ, एक में मॉडल लगाता हूँ और एक में इंपेरेटिव लगाता हूँ। मैं एक जुमला बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम टुमारो, ये विल आ गया, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। सही है जी। अब मैं इसी जुमले को मॉडल में बना लेता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स आई मे नॉट कम, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा, मैंने मॉडल लगा लिया। अब मैं इसी में इंपेरेटिव लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स डोंट कम, अगर बारिश होगी तो मत आना। देख लें, तो तीन वेरिएशन हो गई, एक विल, एक मॉडल्स और एक इंपेरेटिव। और इफ के साथ चारों टेंस आप यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पढ़ाने को तो देखें देखें पढ़ाने को तो मैं आपको सिंपल तरह से पढ़ा दूं, मेरी जान छूट जाएगी, मैं फायदा क्या? Sir. हाँ, Yes, sir. Exactly, Sir. sir. You are right. Sir. It's very Yes, sir. मेरा क्या, मैं तो informative. बोल दूं मुझे प्रेजेंट सिंपल लगा दो, उधर फ्यूचर सिंपल लगा दो, सारे जुमले ऐसे ही बने हुए हैं, देख लें Sir, आपने we स्क्रीन Yes. पे। need to know No. this. Sir, I हाँ, suggest you tomorrow you will you will do homework. So everyone 7 8 every sentence will make, and देखें you please आप listen. लोग व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकती हैं? आप घर पे एक तरफ प्रेजेंट के चारों लिखें, एक तरफ विल के चारों लिखें, फिर मॉडल के सारे लिखें, फिर इंपेरेटिव लिखें। दैट इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस एट होम एंड यू कैन शेयर विद मी टुमारो। कल आप मुझे बोले ओके सर मैंने जुमले बनाए, आई वांट टू टेल यू, मैं बोला ओके प्लीज शेयर योर सेंटेंस विद मॉडल, शेयर योर सेंटेंस विद विल, शेयर योर सेंटेंसेस विद इंपेरेटिव। Great, Yes, sir. sir. Inshallah. हाँ, दैट इज Inshallah, हाउ sir, यू Thank you कैन we so will शेयर much. do. You कंडीशनल Actually, विद we मॉडल। are advise accept. mature sense. Then we will do everything. So हाँ we हाँ, will search. We can दैट इज Jazakallah, व्हाई sir. search. एंड You देन accept टुमारो my देन वी suggestion. विल स्टार्ट सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या है, हाउ कैन वी यूज इट? सेकंड कंडीशनल के साथ क्या क्या कर सकते हैं हम, कौन से मॉडल आ सकते हैं, उसमें कौन से मेन क्लॉज में कौन से वर्ब आ सकते हैं, और इफ क्लॉज में कौन कौन सी वेरिएशन आ सकती है। असल में सर ये जो क्लॉज है ना ये थोड़े से हमारे क्लियर नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ी देखें मुश्किल दो लग रही क्लॉज है। हैं, एक इफ क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। इफ क्लॉज में सारे प्रेजेंट के टेंस आएंगे, मेन क्लॉज में विल के सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे, या मॉडल वर्ब आ जाएंगे, या आपके इंपेरेटिव आ जाएंगे। तीन वेरिएशन है मेन क्लॉज की आपकी। ओके सर। इफ की क्लॉज की इफ तो सेम ही रहेगा, प्रेजेंट टेंस लगा लें, चाहे प्रेजेंट Mhm. सिंपल लगा लें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगा लें, प्रेजेंट परफेक्ट लगा लें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा लें, सब ठीक थैंक यू सर। है ना। इट विल, देखें you are learning, you have just started, I've been teaching for a long time, it's nothing for me because I've been teaching, you have just started, आपके लिए नया है ना, it's new for you because I've been teaching for a long time, it's not new for me, that is why I'm teaching you properly, Yes, sir. it's my duty to teach properly ना। मेरा क्या, मैं तो बोल दूं इधर यहाँ Thank प्रेजेंट सिंपल लगा दें, वहाँ फ्यूचर सिंपल लगा दें, मेरी जान छूट गई। ये ले सारे जुमले ऐसे ही बने हुए हैं आपके पास, देख लें आपने, मैंने तो आपको you. आगे बढ़ के पढ़ाया है कि फ्यूचर परफेक्ट भी Yes, आ sir. You सकता are है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आ mashallah. सकता है। You are very good teaching, sir. But I am not good teacher. So just this is my problem. Inshallah, बिल्कुल, I will make. इंशाल्लाह यू विल बी गुड। देखें इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं कि हमेशा पकाया करें, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इट्स अ कच्चा, इट्स रॉ, इसको आप पकाएंगे कैसे? यू कैन डू द होमवर्क, दैट इज यू आर मेकिंग अ राइप, राइप कहते हैं पकाना, इसको पक्का कैसे Yeah. करेंगी? व्हेन यू वर्क एट द बैक, ये तो कच्चा है अभी, इट्स अनराइप, Yes, sir. यू कैन मेक इट Yes, राइप sir. एट होम, वो आपने घर पे करना है, यू नीड टू डू द होमवर्क, विदाउट होमवर्क इट विल बी जीरो, वहीं खड़ी होंगी आप। आई डिड द सेम व्हेन आई वाज लर्निंग, मैं सीख रहा था तो मैंने ऐसे ही करता था, अपने टीचर के पास से पढ़ के आता था, घर पे प्रैक्टिस करता था 2-2 3-3 घंटे, आई डिड इट, सो यू नीड टू डू इट, हाउ कैन यू डू इट विदाउट, बिकॉज़ आई एम एक्सप्लेनिंग, after explanation you can write more sentences with could, with should, with may, with might, with imperative, with future continuous, with future perfect, with future perfect continuous, with present simple, present continuous, present perfect continuous, with can, with should, जो आपने प्रैक्टिस करनी है at home while I'm taking Yes, sir. class, आप नोट करती रहा करें, keep the Yes, sir. pen in your hand and keep noting, note Yes, the sir. Sir, points. this is The first problem is time I that read. Yes, sir. This is first time. the problem is that अगर मैं ये सब लिखूंगा ना तो सारी क्लास खत्म हो जाएगी इसी में। Yes, sir. I cannot write, that is why I'm explaining, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, you can write the points कि भाई if के Yes. साथ छोड़ आ सकता है politeness के लिए,
भाई इफ के मेन क्लॉज में कंडीशनल इंपेरेटिव भी आ सकता है, जी मॉडल्स भी आ सकते हैं, विल के सारे चारों टेंसेस आ सकते हैं, इधर चारों ये आ सकते हैं. दैट इज व्हाई यू कीप नोटिंग एंड प्रैक्टिस एट होम. नोट कर लिया करें. कीप Yes, sir. अ पेन एंड रजिस्टर विद योरसेल्फ. आप नोट करते रहा करें भाई यही चीजें आ रही हैं, इस तरह में बनेगा. ओके, टुमारो विल इंशाल्लाह स्टार्ट. Inshallah. We have another class Thank now. you so much, sir. Yes. Yes, I think you teacher. may have another class, but your teacher Okay. hasn't come yet. Okay. Yes. Further, Thank you so much, कल sir. हम करेंगे इंशाल्लाह conditional 2. Tomorrow we will start properly. Okay, sir. Second Okay, conditional sir. with a variation as well. Exactly. Okay, take care. See you We tomorrow. have Okay, sir. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.